The name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamualaikum, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home, students. A warm welcome to all of you in a new class. Students, as you know that I have introduced myself in the last introductory lecture. I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I am going to teach you social studies. I hope you will enjoy learning with me. Students, first of all, let's have a look at the book. Make sure that you must have this book, Present Social Studies Class 5. When you will open your book, write down your name, class, must write a section along with your class name and city name. Okay. So here you can see that in the first page of the book there is a content page. Content page में basically इसमें तमाम units mention किए गए हैं. Just like you can see that 6 units in this book और हर unit उन्होंने आगे further 3 to 4 chapter lessons में divide किया. आपको clear है? But in this lecture we are going to start from the lesson number 5, which is in the unit number 2, Culture and Civilization of Pakistan. Okay, let's begin. Lesson number 5, Culture and Civilization in Pakistan. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स बेसिकली हम डिफरेंट प्रोविंस तमाम प्रोविंसेस के कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे. जस्ट लाइक ऑल ओवर द कंट्री देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर्स में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी चीजें जो कि सेम है तमाम प्रोविंसेस में. हम इन तमाम चीजों को स्टडी करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. बुक पेज नंबर 18, lesson number 5, Culture and Civilization of Pakistan. Okay. Student, first of all, must remember one thing before starting reading and explanation. You must have pencils in your hand. आपने वो तमाम important words, important lines को underline करना है ताकि so that you won't find any difficulty in preparing objective. ताकि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करना इजी हो जाएगा जब हम तमाम important lines को, difficult words को underline कर लेंगे. Clear? Okay, जी, let's begin. To understand local culture of any area, it is imperative. Imperative means ज़रूरी है, लाजिम है. It is imperative to know about how people of the area are living their life. मतलब किसी भी एरिया के किसी भी जगह के कल्चर को जानने के लिए लाजमी है, जरूरी है उस जगह के लोग किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका रहन सहन क्या है. अब लाइफस्टाइल में क्या क्या आ जाता है. लाइफस्टाइल इंक्लूड ट्रेडिशंस, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन एंड लॉज. मतलब ट्रेडिशन यानी कि रस्म रिवाज क्या है, उनकी लैंग्वेज कौन सी जबान वो बोलते हैं, उनका मजहब क्या है, कौन से लॉज को वो फॉलो करते हैं. When we talk about Pakistani culture, we see that different parts of our country are famous for the relatively different culture. जब हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह के कल्चर्स को फॉलो किया जाता है. लेकिन although some features of culture are same everywhere in the country, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि तमाम कंट्री में सेम है. जस्ट लाइक हमारे फेस्टिवल सेम है. फेस्टिवल्स यानी कि हमारे त्योहार, हमारे रिलीजन सेम है, मजहब सेम है, हमारी नेशनल लैंग्वेज यानी कि जो कि कौमी ज़बान हमारी उर्दू वो ऑल ओवर द कंट्री बोली जाती है. ये तमाम चीज़ें सेम है. अब हम इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. In this chapter, we are going to study about the culture of different provinces. We will study about culture in Balochistan, culture in Sindh, culture in KPK, culture in Punjab, and the culture in Kashmir and Gilgit-Baltistan. Okay, as you can see that I have highlighted the number first, culture in Balochistan. It means that we are going to study only about culture in Balochistan in this lecture. Okay. Let's begin. कल्चर इन बलोचिस्तान. ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट बलोचिस्तान की पिक्चर बलोचिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है. यू कैन सी दैट ड्रेसेस ऑफ मेन एंड वुमेन आप यहाँ पे देख रहे हैं. उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट्स को देख रहे हैं आप. उनकी स्पेशल डिश यानी कि जो कि सब्जी है वो आप देख रहे हैं. ओके, लेट्स रीड अबाउट कल्चर इन बलोचिस्तान. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि बलोचिस्तान की कैपिटल क्या है. द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान इज क्वेटा. Okay, people of Balochistan are very famous around the world because of the local dressing and healthy food.
बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों, किस वजह से फेमस है? अपने हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड की वजह से, अपनी ड्रेसिंग की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है ऑल ओवर द कंट्री वर्ल्ड। अगर हम स्पेशल डिशेस की बात कीजिए, देखिए हर जगह की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, स्पेशल डिश होती है। जैसे अगर लाहौर की बात कीजिए, लाहौर की जैसे बट कढ़ाई, इस तरह से अगर हम बलूचिस्तान की बात की करें तो बलोची सब्जी इज लाइक्ड एंड ईटन ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है बलोची सब्जी, जो कि ऑल ओवर द कंट्री बहुत पसंद की जाती है। ना सिर्फ पसंद की जाती है बल्कि खाई भी जाती है बहुत शौक से। बलूचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर हम जगह के लिहाज से बात करें यानी कि रकबे के लिहाज से, तो बलूचिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस है कि एरिया बहुत ज्यादा। लेकिन वाइस वर्सा अगर हम पॉपुलेशन के लिहाज से बात करें तो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन सबसे कम है। बाकी तमाम प्रोविंसेस से कंपेयर करें तो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन सबसे कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों कम है? क्योंकि वो मोस्टली हमारा डेजर्ट एरिया, बलूचिस्तान में क्या है, डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया में ऐसा जितनी हमारी पॉपुलेशन नहीं होती। अभी क्यों नहीं होती हम आगे डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बलोची मैन, अगर हम ड्रेसेस की बात करें तो बलोची मैन क्या वेयर करते हैं? टर्बन ऑन देयर हेड। यू कैन सी दैट टर्बन जस्ट लाइक द वुमेन वेयर शलवार कमीज, जो ऑल ओवर द कंट्री हमारा फेमस मेनली पहना जाता है। Balochistan is a huge storehouse of multiple minerals. Storehouse क्या होता है? Storehouse basically गोदाम, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? वो मादनियात, वो चीजें जो कि हमारी ज़ेरे ज़मीन निकलती है, जमीन के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको हम डिफरेंट चीजों में यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिंग्स में डिफरेंट स्टोन्स वगैरह लगे, तो मिनरल्स ही तो होते हैं हमारे, इसको हम डिफरेंट चीजों में यूज करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, that's all about today's lecture. Diary is, you have to underline difficult words on page number 18 and learn their spellings. Okay, what you have to do, you have to underline all these difficult words and learn their spellings. Well students, take care of yourselves. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.